what are the figures that we must look at in the financial statements of any company to figure out if the management of this company is indulging in any kind of diversion of funds from the business or siphoning of the funds from the business. So number one, look at the non-current assets. And I'm sure you will remember non-current assets. So, look at the non-current investments. Non-current investments is meaning what? It means it is possible that the business is investing money into some other business or some other company, and which means if this business is already having liquidity crunch, and to top it further, it is making investment in some other company, that means there is a problem, and that means this business is indulging in diversion of funds. Number two, look at the long-term loans and advances. I am sure all of you would remember we discussed in the balance sheet there was an item called long-term loans and advances. So what are the long-term loans and advances? Money given by the business to outsiders. Look at the figure of long-term loans and advances. It is quite possible that some of these amounts may have been used by the businessman for diverting the funds to his relatives or his associates or his own companies. Number three, also look at the current investment. So current investment is where the company is putting money into the shares and debentures and the short-term securities with an objective to make quick profit. So there is nothing wrong in putting money in current investment or in shares and debentures, provided the company has a surplus money. So एक तरफ तो वेंडर आपको बार बार घड़ी घड़ी फोन कर रहा है कि भाई मेरा पेमेंट कर दो, मेरा पेमेंट कर दो, मेरा पेमेंट कर दो, मुझे एडवांस दे दो, मुझे एडवांस दे दो, और दूसरी तरफ आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि उसकी बैलेंस शीट में एक साइजेबल अमाउंट है ऑन अकाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वेंडर आपसे पैसा लेके वो पैसा शेयर मार्केट में लगा रहा है. सो दैट इज व्हाट यू कैन लुक एट द करंट इन्वेस्टमेंट. Look at the short-term loans and advances. So same thing as applicable in case of long-term loans and advances. Same thing can also happen in case of short-term loans and advances. So balance sheet में short-term loans and advance का फिगर है, वो जरा चेक करिए कि लास्ट ईयर से इस बार बढ़ गया क्या, अगर बढ़ गया तो कितना बढ़ गया. So then that will give you an idea. And remember, देखो एक बिजनेस जिसको कि लिक्विडिटी की क्रंच है और अगर उसके लोन्स एंड एडवांसेस के फिगर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. अगर मेरे पास में पैसे की कमी है और दूसरी तरफ में मेरी एसेट्स बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं जो पैसा कहीं से ले रहा हूं और मेरे इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूं. आई एम नॉट सपोज टू डू दैट. बिजनेस का पैसा मुझे पहले बिजनेस में इस्तेमाल करना है. बिजनेस में इस्तेमाल करने के बाद अगर कुछ बचता है देन आई कैन यूज इट समवेयर. बट इफ आई एम डूइंग इट, इफ आई एम गोइंग टू माई कस्टमर, asking, pestering them for payment, advance, and simultaneously मेरी बैलेंस शीट में मेरे लोन्स एंड एडवांस के फिगर बल्जियन हो रहे हैं, मेरे करंट इन्वेस्टमेंट के फिगर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आई एम डाइवर्टिंग दी फंड्स. देन नंबर 5, गो थ्रू दी शेड्यूल्स टू P&L एंड बैलेंस शीट. देखिए अब आप जब किसी कंपनी का P&L उठाए, एनुअल रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसमें पहले बैलेंस शीट होती है, फिर P&L होता है, और उसके बाद में फिर शेड्यूल्स रहते हैं. शेड्यूल्स दैट इज द डिटेल्स ऑफ एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एंड द P&L. ब्रेकअप होता है उसका, उसको चेक करिए, उससे भी आपको आइडिया आएगा कि इन केस द कंपनी इज इंडल्जिंग इनटू डाइवर्जन ऑफ और साइफनिंग. गो थ्रू नोट्स टू अकाउंट्स गिवन इन एनुअल रिपोर्ट. सो एवरी कंपनी when they prepare the note accounts, they also have notes to accounts. So notes to account में वो जो information numerical में नहीं दी जा सकती है, that information is presented in the annual accounts as notes to account. और उसमें कई बार कुछ बातें छिपी होती हैं, तो वो पढ़ेंगे तो वो भी आपको पढ़ने से ध्यान में आएगा. In case if this company is doing diversion of funds or siphoning of funds. Then check the transactions with the related parties. So in the accounts, every company is under obligation
as per the Companies Act, as per the accounting standards, and in case if it is a listed company, then as per the SEBI regulations also. So as per the Companies Act, as per the accounting standards, and as per the SEBI regulations, every company in this country is supposed to give disclosure about the transactions with the related party. So कोई भी related party के साथ में अगर transaction है तो वो company को उसमें disclose करना पड़ता है. तो you look at the transactions with the related party, और उसमें पढ़ के आपको ध्यान में आएगा कि कोई इन्वेस्टमेंट का हुआ है क्या, एंड अगर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का फिगर है और दूसरी तरफ वेंडर आपको बोल रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दैट मीन्स द वेंडर इज इंडल्जिंग इनटू डाइवर्जन ऑफ फंड्स. एंड फाइनली फ्रेंड्स, look at extraordinary changes in any of the figures of the previous year. So when you are looking at the P&L, when you are looking at the balance sheet, you know what you can do is just do Excel sheet calculation कि ये फिगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया. ठीक है, तो वो जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, इफ यू क्लोजली लुक एट इट, इट विल गिव यू एन आइडिया इन केस इफ देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद अ पर्टिकुलर figure, and that is what you can do to watch out in case if any vendor was indulging into siphoning or diversion of funds. So with this friends, we come to the close of the discussion on this, and now we move to the next topic, that is cost concepts relating to marginal costing and break-even analysis. If you have any question on the fund flow, if you have any question on what are the figures that we need to watch, or that we need to keep a watch on for ascertaining in case if any of our vendor or supplier was indulging into diversion or siphoning of funds, you can please ask me.